So I'll start off. In the previous class, we just started off with understanding the terms ethics, integrity and aptitude को समझा. We understood what is aptitude. It's a skill, a talent towards a particular thing. It can be innate, it can be acquired. It is different from intelligence. Intelligence is whether you are able to process an information, can come up with a solution, can come up with a rational solution. If I talk about integrity, integrity is you will stand for your values, you will stand for your principles, no matter whatever the situation is, whatever the happenings is going on. Integrity ke examples we saw. It was Ashok Khemka ji, we saw Gandhi ji, we saw Lal Bahadur Shastri ji. That is what we say. आपके लिए administrative aptitude होना बहुत जरूरी है. However, it cannot convey an effective governance. Even if you have good administrative aptitude, it will not mean that you have a good governance, because for good governance, for ethical governance, you need ethics and integrity. Ethics यानी अपनी values के लिए खड़ा रहना हमेशा. Integrity was that. What is ethics? Ethics is basically a field of study. What does it help me? It tells me what is right or wrong. It tells me what is right or wrong. But ये क्या है? It is not as easy. With the place our society is, जिस cusp पे हमारी society खड़ी है, where various interpretation with various exposure that we have. Some of us having advantage or benefit of liberal education. Some of us still being in that conservative mood. Okay? Despite that, there are so many places where I can see what is right or wrong. I can take my reference from religion. I can take my reference from constitution. I can take my reference from Gandhi ji kya keh rahe. I can take my reference from Immanuel Kant sir kya keh rahe. I can take my reference क्या मेरा एक्शन का कॉन्सिक्वेंस सही है, क्या मेरे एक्शन का मीन्स सही था, रास्ता सही था. So there are various interpretations, so it is not as easy. Then we understood about करना क्या है, what is the essence of ethics. ठीक है, आप right और wrong तो अलग अलग तरीके से देखना चाहते हो, but what are you trying to do? What is ethics trying to do? The essence of ethics is it aims at creating a virtuous society. It aims at creating a harmonious society. Peace, love, compassion, virtuous society create करना चाहिए. ठीक है. Determinants क्या है? कौन ethics को determine कर सकता है? There are various determinants. We have determinants in the form of law, constitution, religion. You have your norms. You have your other thinkers. बहुत सारे morality and the intuition are things. That is your determinants of ethics. We understood this thing. Then we moved on. इतना ही देखा था. That is what we've done. Essence and determinants. And then we moved on to this, understanding the difference between morality and ethics. Morality क्या होता है? Morality is more individualist specific. Ethics is more society specific. Okay, that's what we have done. So I'll move on. I'll continue on with this. Let me just tell you कि questions क्या पूछ सकता है. आपसे कोई भी if you looked at question, they can ask you difference between the terms. They can tell us the difference between morality and ethics in 10 marks. They can tell you that they can give you what does happiness mean to you? What does anger do to you? That is what questions can be asked. 10 marker के लिए questions simple होते हैं. Last year से trend थोड़ा बदल रहा है. Demand समझना बहुत important है. Otherwise the question has been simple. I'm moving on for class today. We've already seen how to make diagrams also, right? Diagrams. We'll start off with the question. The question is, this is a UPSC question that has been asked. Please write. What is the significance of ethics? Ethics करना क्या चाहता है? Ethics important क्यों है? What is the significance of ethics? Yeah. Before I start writing, before I start dictating, बताओ what is the importance of ethics? One, you have already told me, a virtuous society create करना चाहता है. बताओ. You were about to say this, इसलिए मैंने पहले लिख लिया. Ethics क्या करना चाहता है? Virtuous society create करना चाहता है. और सोचो क्यों पढ़ रहे हैं ethics? क्यों पढ़ते हैं? Parents क्या करते हैं? Parents चाहते हैं कि आप अच्छे इंसान बनो. ठीक है? तो उनका what do you want? तो पेरेंट्स की जगह पे ना अब एथिक्स को रिप्लेस कर लो. What is ethics trying to do at the individual level? It is trying to
मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, आपने एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान यानी क्या? यू शुड बी अ पर्सन फुल ऑफ वर्च्यू। कैसा बनना है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बनना है, तो वर्च्यू होना चाहिए आपके पास। यानी वर्च्यू यानी क्या? एक पॉजिटिव ट्रेट होना चाहिए। पॉजिटिव ट्रेट यानी क्या? यू शुड हैव लव, यू शुड हैव केयर, यू शुड हैव कंपैशन। और क्या करना चाहिए? यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दी वाइसेस, आप में ग्रीड नहीं होना चाहिए। What do the parents do? They will aim at making you a good individual. Consider it as your parent. It is trying to make you a good individual. ठीक है? अगर ethics का मतलब यानी ethical society यानी जो virtue society है, ethical society यानी जिसके पास values है। अगर एक society, ये तो individual level पे आप अच्छा इंसान बनो, आपके पास virtue हो, आप vices से दूर रहो, आपका क्या करेगा? What is it trying to do? Can I say it is trying to build character? It is trying to build your strong character. If health is lost, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So what is ethics trying to do? Build you a strong character. ये सब individual level पे है। सोचो आप एक ऐसी सोसाइटी में हो जो वर्चुअस सोसाइटी है, ठीक है? तो एथिक्स एक सोसाइटी के लिए क्या करता है? एथिक्स सोसाइटी के लिए, व्हाट डज द एथिक्स डू फॉर सोसाइटी? कैसी सोसाइटी बनाएगा? वर्चुअस सोसाइटी बनाएगा। और क्या करेगा? अगर एक सोसाइटी वर्चुअस है, so you will have what? You will have trust towards each other. आपका क्या बनेगा? Can I say social capital strong बनेगा। कभी कभी काम अगर किया हो, ठीक है, if you have ever worked in your life, देखोगे mostly in offices it is not just about work that is being talked about. It is about वो क्या कर रही है, वो किससे ज्यादा बात करती है, वो उसके वो तो काम नहीं करती बट क्रेडिट ले लेती है, ये तो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, ये हार्ड वर्कर है बट ये बताता नहीं है। यही चलता है ऑफिस में। क्यों यही चलता है? और बहुत ही कम ऑफिसेज होते हैं मतलब जो गुड कॉर्पोरेट वर्क प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है। इट इज सेड दैट वेरी फ्यू पीपल कैन मेक अ टीम बिकॉज ट्रस्ट नहीं होता। तो अगर एथिकल हो, अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, तो एटलीस्ट ट्रस्ट बन सकता है सोसाइटी में, ठीक है। वी विल ट्रस्ट ईच अदर, यू विल हैव गुड सोशल कैपिटल। अब सोचो क्या सिग्निफिकेंस है एथिक्स का इस डायरेक्शन में, क्या करना चाहता है एथिक्स? You feel, you do not have feeling of cognitive dissonance, ठीक है, cognitive dissonance नहीं होता, ठीक है, आपका mental peace होता है, you feel peaceful, शांति लग रही है, अच्छा लग रहा है, mentally you feel peaceful। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में सोचो या पॉलिटिक्स में सोचो या गवर्नेंस में सोचो, क्या बोलते हैं जनरली? क्या बोलते हैं? सब एक जैसे हैं, nobody is taking care, all of them are same. If we have ethical human beings, if we have a person following values, what will happen? Trust deficit in governance will fall. ज्यादा ट्रस्ट आएगा कि हाँ ये है तो मुमकिन है, ये है तो पॉसिबल है। क्या करना चाह रहे हैं? यही तो करना चाह रहे हैं कि हाँ वी आर अ चेंज एजेंट। अब की बार दूसरी सरकार है, तो ये सब क्या है? दिस इज लाइक टेलिंग यू दैट वी आर एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, देखो आप सिविल सर्वेंट रहेंगे, सोसाइटी को सर्व करोगे, यू हैव पावर, यू हैव पावर, सिटीजन्स डू नॉट हैव एज मच पावर, ऑलरेडी पावर एसिमेट्री है। जब पावर एसिमेट्री आता है तो ट्रस्ट डेफिसिट आ सकता है कि पता नहीं कैसे काम चल रहा है, हमारे लिए सर्विंग हो भी रही है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रस्ट डेफिसिट कम करने के लिए, सिटीजन को भी अच्छे से सर्व करने के लिए आपको एथिक्स की जरूरत है। तो एथिक्स का सिग्निफिकेंस जब सोच रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, सोसाइटी लेवल पे सोचो, एडमिनिस्ट्रेटिव के लेवल पे सोचो। बेसिकली यू हैव टू थिंक कि if we have lot of values, what will happen? What is ethics trying to do? Bring a strong character, bring strong values, reduce trust deficit. समझ आ रहा है? तो लिखो, yes, inculcation of values like discipline, virtues like discipline, ठीक है। लिखो significance of ethics. First point, at the individual level, at the individual level. First, character building, character building. Second, tackle ethical dilemmas. Ethics बताना क्या चाह रहे हैं, right और wrong. Ethical dilemmas होगी, ethical dilemma यानी क्या?
कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे आप 100% करेक्ट चॉइस नहीं बना सकते, दैट इज एथिकल डायलेमा। जैसे कि अबॉर्शन हो गई, सर्गेसी हो गई, ठीक है। तो एथिक्स हेल्प्स इन टैकलिंग एथिकल डायलेमास, एग्जांपल अबॉर्शन। थर्ड पॉइंट, it helps develop virtues like tolerance, compassion, and helps in avoiding vices, vices like greed, corruption, anger, jealousy। बेसिकली जो रहा हम भूल चुके हैं ना, अच्छा इंसान बनने की वापस से वो इनकलकेट कर रहा है, ठीक है। we somewhere tend to ignore all this, but then it is trying to do. Right, the next point, it helps to ethics helps in empathizing with the problems of others, empathizing with the problem of others। कैसे समझोगे किसी और की प्रॉब्लम अगर कंपैशनेट इंडिविजुअल हो ही नहीं, आप नहीं समझ पाओगे किसी की प्रॉब्लम, ठीक है। it helps to achieve summum bonum, SUMM, summum bonum, BUNUM। बहुत मजे की बात है, I'm telling you what does this mean, बहुत मजे की बात है। You actually, what happens is when we start growing up, our first preference is to be a good son or daughter. While we are very small, you have to be good daughter, good son. As you grow up, you develop your own values. As you become responsible, आपकी priorities होती है कमा लेते हैं, let's earn some money, then you create your own family, just a normal trajectory that usually happens. You start your own family. Once you have achieved the the comfort level, you have your own house, you have your own car, you have your own things, you have a decent life, then you start off thinking giving back to the society, okay? And every time, even while you are working, or you want to be a good girl, good boy, or you are creating your own family, there is an inherent calling inside that you have to be a good individual. We all have an inherent calling inside कि एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है बाकी सब ठीक है, एक अच्छा इंसान बनना है। This is your summum bonum, that what do you want to be? You want to be a highest ethical person that an individual can be. So ethics helps you achieve this, कि आप jealousy avoid करो, hate avoid करो, anger avoid करो, have go for certain virtues. You should have care, love, compassion. So ethics helps you to achieve this summum bonum. लिख लो bracket में, the highest good that an individual can achieve. समझ आया? इस एक और चीज, एक और लाइन लिख सकते हैं। See, why are we called as human being? We are called as human being not because of human body, ठीक है। We are called as human being because we have certain human values. Everyone has certain human values. Everybody would love to be loved. Everybody would be loved to be taken care of. Everybody would be loved to be heard. हर एक को freedom चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी human values है। We all are tied up because of these human values, not just because of the human body. और ऐसे में ही एक ऐसे पूछा था, the essay was that life, ये 1200 वर्ड लिखने, life is a long journey from human being to being human, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? Life is a long journey from human being to being human, ठीक है। इस पे 1200 वर्ड लिख रहे हैं, you have to write. It is about you are human being, but are you humane enough? Do you have good values? Can your good values replicate into the benefit of the society? तो यही आपको ethics help करता है to achieve the summum bonum, to achieve the highest good that an individual can achieve. लिख सकते हो ब्रैकेट में, we are human beings not because of the body but because of the values that we have, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखे इंडिविजुअल लेवल पे, it helps create clear conscience, जो था बोला था मेंटल पीस के लिए, conscience क्लियर होने के लिए। एक I don't know if you have heard this quote that गांधी जी ने बोला था that there is no higher court of justice than the court of conscience. अगर आपके conscience ने बोला है कि आपने सही किया है,
ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट, आपका जमीर चीज बोलता है कि हाँ सही था, तो फिर तो सही था, फिर नथिंग कैन, nobody can change it. So we will write this, that there is a higher court, there is a higher court than the court of justice, and that is the court of conscience. That is the court of conscience. It supersedes all other courts, all other courts. Dash महात्मा गांधी. गांधी जी हमेशा कॉन्साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. उन्होंने क्या बोला था? he said no breaking of the salt tax, breaking of the salt Dandi March में. He said that this one of the highest duty that I consider of an citizen, कि आप unjust laws को avoid करो. He says it is an unjust law and it should be broken, and he said that it is one of the highest duty that a citizen can do. ठीक है, so if you have some time, read karna My Experiments with Truth, Gandhiji's book, very nice book. How a person, imagine a person of that stature, national leader rahe, father of the nation rahe, he is accepting ki haan, in my childhood what I have done. Okay, how as a person, Gandhiji himself has written a book and said that yes, I have indulged in taking money, I have indulged in theft, I have indulged in lying. How did I confess in front of my father? A person of national leader, that stature, saying this. My Experiments with Truth. Zyada badi book nahi, 200-300 pages ki, a very beautiful read. You will start loving ki haan maza aa gaya padh ke. You can read that. Ek aur kitab hai, The Difficulty of Being Good. That is a little heavier book, but then it starts off with saying ki what as an individual we want to achieve, what as a human being we want to achieve. As a human being we want to be a good human being. That is what the ultimate aim is. क्यों ऐसा करना है, क्यों अच्छा होना है? Why should I be good individual? Because society का फायदा होता है. क्यों अच्छा individual रहना है? Society का फायदा से मुझे क्या होगा? मुझे mental peace मिलेगा. मुझे mental peace मिलेगा, उसके लिए क्या करना है? अच्छा इंसान होना है. क्यों बनना है? क्योंकि अच्छा इंसान बनना है. लास्ट में ना एक क्वेश्चन आता है कि why you want to be a good human being? Because it is important for you to be a good human being. वो अपने आप में ही, it's like circular argument है. अच्छा इंसान क्यों बनना है? क्योंकि अच्छा इंसान बनना है. That is it. इसके आगे कोई question mark नहीं आता है. So this is what ethics is trying to do at the individual level. लिखो, at the society level. First, it aims at creating morally virtuous society. Second, it aims to bring harmony and cohesion in society. Harmony and cohesion in society. Third, remove social evil. Sati, imagine no, a live person being burned. We cannot even think of. कुछ आप सोच भी नहीं सकते. तो एथिक ही था, एक किसी इंसान की मोरालिटी ही थी. The one person who stood for, became a leader and changed the norms in the society, changed the practices in the society. So ethics social evils को हटाने के लिए भी बहुत important है. That is what your ethics aims to do, right? It helps in honest functioning of society. Honest functioning of the society. Okay, this is at the level of society, right? At the administrative level, administration में कैसे help करता है? अब बता दो, administration में कैसे help करेगा? Compassion, empathy रहेगी तो effective service delivery रहेगी. ठीक है, ये है टॉपिक है effective service delivery. Compassion और empathy रहेगा तो effective service delivery रहेगी. और good ethical governance के लिए overall ethical governance achieve होगा. Yes, online class. What will they do at the level of administration? Or lead by example. Build the trust administration में build हो सकता है. और trust build होगा तो उससे क्या होगा? Decision making कैसी होगी? Fast होगी. ठीक है, you will have faster decision making. Can I say ठीक है, impartiality. Can I say leadership जो रहता है, ethical leadership, वो क्या कर सकता है? It can influence, have social persuasion. ठीक है, तो ये सब काम करेगा. लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट, it aims at bringing ethical governance. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? What is the biggest problem in administration?
Ethics will help in reducing corruption. Second, it helps in reducing corruption. And misappropriation helps in reducing corruption and misappropriation of funds. सही पैसा सही जगह पे खर्च होगा। ठीक है, देखो क्या करना है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है ना, तो आपको एक तो आइडियल पाथ पे जाना है कि हाँ अच्छा इंसान बनेगा, सोसाइटी में अच्छी चीजें होगी, सोशल लेवल्स कम होंगे, ठीक है, आप कंपैशनेट बनोगे, वाइसेस को कम करोगे, एक तो ये। ठीक है, तो एक तो अच्छाई की रास्ते पे जाने पे हेल्प करता है और एक तो बुराई से बचने के लिए हेल्प करता है। एथिक्स यही काम करता है, अच्छाई के पथ पे ले जाएगा, बुराई से बचाएगा। तो कैसे सोचोगे, ये प्रॉब्लम है, ये अवॉइड करेगा, ये अच्छी चीज है, इसकी तरफ मोटिवेट करेगा। ठीक है, राइट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, it increases the trust between all the stakeholders. It increases the trust between all the stakeholders. Very good, Neelam. It helps in next point, it helps in solving ethical dilemmas. It helps in solving ethical dilemmas. ठीक है, so this is the importance of ethics. Question क्या पूछा था यूपीएससी में, exact question का wording लिख ले। The question was 2016 का question है, explain how ethics contribute to social and individual well-being. Social and individual well-being, कैसे ethics help कर सकता है in social and individual well-being। समझ आए, यही चीज लिखनी है, सोसाइटी well-being और individual well-being। इसमें अच्छा एग्जाम्पल लिखना, have some good example which is your example। ठीक है, this was about one। Now this is what we started off। How will you introduce, ये जो question है, ठीक है, let's start off with this only, कि how ethics help in individual well-being and societal well-being। Start कैसे करोगे ethics में? Introduction would be, generally you will start off with the definition। किससे start करोगे, what, कौन सी definition लिखोगे, individual well-being की societal well-being की ethics की? You will generally introduce the definition of ethics। What is ethics? Ethics is a prescriptive code of conduct which helps in deciding what is right or wrong। ठीक है, it is, these are general standards set by the society, that is your ethics। उसके बाद क्या लिखोगे बॉडी में, how does it help in individual well-being, how does it help in societal well-being। अच्छाई के रास्ते पे लेके जाएगा, बुराई के रास्ते से बचाएगा, अच्छाई के रास्ते पे सोसाइटी को लेके जाएगा, बुराई के रास्ते से सोसाइटी को बचाएगा। कंक्लूड कैसे करोगे, how will you conclude? चलो ठीक है, ये लिख लोगे कि एथिक्स और भी जगह हेल्प करता है, सिर्फ इंडिविजुअल और सोसाइटी के वेलबींग पे नहीं, और भी जगह हेल्प कर सकता है। एक तो ये हो गया, हाँ, मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो, इन कंक्लूजन सोल्यूशन बता रहे हो कि कैसे आप एथिकल इंडिविजुअल बनोगे, हाउ यू कैन डेवलप एन एथिकल सोसाइटी। कैसे बनाओगे एथिकल सोसाइटी, सोचो, थोड़ा सा सोचो, we will deal with that। How will you make your society ethical society? How will you make an individual an ethical individual? किसी एक इंसान को दे दिया है, आपको प्रोजेक्ट दिया है कि इसको आप एथिकल बना के दिखाओ, कैसे बनाओ? How will, जो मुझे टास्क दिया हुआ है, बताओ कैसे बनाओगे? How will you make it? वैल्यू एजुकेशन दोगे, ठीक है, एक हो गया वैल्यू एजुकेशन दोगे। दूसरा सोशलाइजेशन, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन को इफेक्ट करोगे। और तुम्हारी क्यों सुने वो, तुम भी तो कुछ करो, लीड बाय एग्जाम्पल। तुम पहले अच्छे इंसान बनो, उसको इंस्पायर करो ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। सो यू विल, हाउ विल यू डेवलप एथिकल सोसाइटी? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, socialization, changing the agencies of, inculcating the ethical values in the agencies of socialization like family, friends, peers. You have to lead by example. You will have to reward for good behavior, you will have to punish for the bad behavior। समझ आ रहा है कैसे करोगे? क्यों नहीं, you will have to find, यहाँ पे persuasion काम आता है। अगर पूरी जनता ऑफिस की बाहर है और आप अंदर हो, तो आपको उस पूरी जनता में से एक या दो इंसान ऐसे उठाने हैं जो कि आपकी वैल्यूज के साथ सिंक करता है। वो दो इंसान को अपने खेमे में लेना है, और फिर वो एक से भला दो, दो से भले तीन, और फिर वो माहौल चेंज होगा। व्हाई इज इट सेड? एक मछली पूरे चीज को खराब कर देती है और एक अच्छा व्यक्ति पूरी चीज को बदल सकता है। तो यही सोशल इन्फ्लुएंस, यही परसुएशन, यही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म काम आता है। इवन इफ द एंटायर, इवन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स एट योर डिस्पोजल, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ऐसे भी, कि फाइंड द राइट पर्सन, क्रिएट अ नैरेटिव, create award, appreciate for a good work, you will see the attitude starts changing। ठीक है,
That's what you will have to do. So conclusion में क्या लिखोगे? How will you create a ethical society? Now, let's move on to understanding few terms. We give the heading. इसी की heading दो. Belief, comma values, comma attitude, morals, ethics. Belief, value, attitude, morals and ethics. क्या क्या देखेंगे इसमें? What are we gonna see? We will see what are these. अभी हमें ये नहीं पता ये क्या है. What are these? What is the relationship between them? What are the characteristics of these? How do they develop? How do they develop? Belief, attitude, values, morality और ethics. देखिए ये सब क्या है? ये सब हमारी what is a belief? आपकी सोच है, आपको mentally construct है. That is how you think. I believe that everybody is a good individual. I believe that not many of them are corrupt. I believe that a hard-working person at the end wins. ठीक है, ये मेरा belief है. I believe that we will have to go through learning process every time we are changing our occupation, we are changing our desires, we'll have to go for some skill building. ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये सब belief, values, attitude, morality, ethics, ये सब mental construct है. क्या करते हैं ये mental construct? These are the mental constructs. What do? They actually govern my behavior. If I believe in hard work, I will do hard work. If I believe in being honest, I will be honest. So these are mental constructs which guides our behavior, which guides our choices. That is what your belief, attitude, values, morality, ethics are. सब में difference क्या है? What is a belief? What is a belief? Belief का मतलब आपको ऐसा विश्वास है. You believe in something that it is an internal feeling that this is true. You have some internal feeling that this or this thing is true. That is your belief. Are all the beliefs rational? No, not all the beliefs are rational. Some can be rational, some can be irrational. You can have some belief which can be very strong. You can have some beliefs which are not very strong. Yani you can have some beliefs which are your core belief. क्या होता है belief? Internal feeling. Internal feeling that something is true. It can be rational, it can be irrational. बिल्ली रास्ता काट गई तो खराब होगा. ये irrational belief है, कोई proof नहीं किया है. If you believe in hard work, you know that hard work at the end, if it's hard work that wins, even if the talented don't work. ये भी एक belief. So you can have certain beliefs which can be very strong belief, which can be a core belief. Your opinions are because of your belief. You believe something, therefore you have an opinion. You will not have an opinion unless and until you believe in it. कभी सोचना इस बात पे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ. ठीक है, so you will not have a strong belief, a strong opinion unless and until you believe in it. ठीक है, तो ये है आपका. कुछ होते हैं strong belief, कुछ होते हैं peripheral belief. Peripheral belief or weak one. So these are not the basis. A very strong belief becomes your values. I believe my value is love. My value is care. My value is compassion. Because I believe that love, care, compassion can change an individual. I have a strong value towards somebody who does hard work. किसी ने अच्छा काम किया, hard work किया तो मुझे अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि I believe in hard work. I believe in that you constantly learn, you will win. Because I believe in learning. So a very strong belief becomes your value. This is your value. ठीक है, मैं रिलेशन पहले तो ये है क्या? ये मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं. करते क्या है? डिसीजन को हेल्प करते हैं, हमारे बिहेवियर को हेल्प करते हैं. What is the relation between them? I said a very strong value, a very strong belief will become value. What is values? Now you are a person. What you value? It is seen that SSBs में होता है generally, right? That you are given just a story and then you are told to write your interpretation. It actually tells you about your values. आप कैसे चीजों को देखते हो,
आप कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे? What action will you take in life? That depends on your values. So your values will determine your attitude. Your values will determine what is morality for you. The values at the level of society determines what is ethics. I will repeat. It is you are a product of what you think. You are a product of what you believe in. You are a product of what you value in life. Your values shapes your attitude. If it's like I value learning, I value hard work, I will work hard for the examination. If I value कि यार सब किस्मत का खेल है, ठीक है, किस्मत ही होती है लास्ट में, I will not do as much of hard work because then I will leave it to the luck. तो मेरा जो attitude है, what is an attitude? The way you behave, the tendency to behave, the tendency to look at things is your attitude. What is value? It's a preference. आपका preference क्या है? आपके पास बहुत सारे choice हैं, आप उसको prefer करो. How you tend to behave is your attitude. Your values shape your attitude. Your values shape your morality. It is your values which tell whether live-in relation is right or wrong. It is your values which tell same-sex marriage is right or wrong. It is your values which tell that taking dowry is right or wrong. It is your values that determines your morality. Morality क्या है? Individual outlook of right or wrong. क्या आपको सही और क्या आपको गलत लगता है, ये individual level पे that is your morality. और जो society की values हैं, the society values determines what? The ethics. So the ultimate core is what? What did you believe in? A very strong belief turned into value. So this is the relationship between them. ठीक है, पहले इतना लिखते हैं, then we'll start moving. ठीक है? Yes, the characteristics of the value. Can value be changed? Yes, values can be changed. Values are not absolute. Values are not static. Values are not permanent. Values can be changed. For your belief can also change. But for you to change your belief, आपके belief change होंगे तभी ही तो आपके values change होंगे. Belief change होगा तभी values change होगी. किया काम नहीं हुआ, कुछ दूसरी जगह पे किया काम कुछ नहीं हुआ, तीसरी जगह पे किया काम कुछ नहीं हुआ, फिर लाइक छोड़ो इतना काम किया है, अब जो होना है होगा. योर बिलीफ हैज चेंज. अब लगता है छोड़ो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, चिल लाइफ जिएंगे. ठीक है, होना तो वही है जो होना है, तो चिल लाइफ जिएंगे. यस, योर बिलीफ कैन चेंज. कांस्टेंट different opinion if you get, your belief can change. ठीक है, can I move on? It is not as easy to change value. It is, your values can be changed. It is not static, but जो आप इंसान होते हो, you have already invested a lot in your values. When you've invested a lot in your values, it is not as easy to change. So what is value? It is relatively permanent. आप कितना भी बोल लो, आप कितना भी कर लो, आपके जो इनिशियल स्टेज पे वैल्यूज बने हैं और जो आप इतने टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होगा. एंड एज यू ग्रो ओल्ड, it becomes further more difficult to change your values. It is very easy to change the value of a 20-year-old person, but it is very difficult to change value of a 50-year-old person because that person has lived through those. It's like अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमको मत सिखाओ. ठीक है, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है. If you try to change somebody else's value, a senior to you, he'll say, I have seen more world than you, I have lived more world than you, I know it what it is. So please don't tell me. अभी तुम बहुत छोटे हो. It is easy to change somebody who has recently seen through. अभी उसको permanent बनाया नहीं. It can be changed, but it is not as easy to change also. ठीक है, लिखो. What are these concepts? पहले तो लिख लिया, heading लिखिए, लिखो. What are these concepts? These are the mental constructs that acts as an instrument of behavior regulation. Behavior regulation. Full stop. They guide our decision making, comma, influence our choice and behavior. Belief का भी लिख लो definition. Belief is an internal feeling that something is true, an internal feeling that something is true. It can be rational or irrational. They are mostly rooted in tradition, comma, myths, myth,
myth, comma verifiable facts, किसी में भी हो सकते हैं, facts पे, myth पे, tradition पे, comma superstition पे. क्यों होते हैं belief? What does belief give? Why do we have belief? It gives us hope. Belief is something that gives us hope. I believe I can be an IAS officer. It gives me hope. Beliefs gives us hope. हमारा जो human है, right? We as a human thrives on our belief. We do everything that we believe in. हमारा कहीं ना कहीं belief system ही हमें govern करता है हमारे actions पे. ठीक है? You can write that. There can be core belief. There can be core belief which are long lasting, and there can be peripheral beliefs. Both can be changed. Both core as well as peripheral belief can be changed. But then it is difficult to change. It is difficult to change core belief. It is difficult to change the core belief. ठीक है? तो ये था belief. लिख लो values. Next point, values. I'm just giving you the definition of all of them. Values. These are the preferences held by an individual. These are the preferences held by an individual. And they are the guiding principles. And they are the guiding principles. Values are general determinant of behavior. Okay. And when I say general determinant of behavior, इसका ये मतलब है that does not guarantee behavior. We all believe you have a value, strong value towards peace. आपकी preference है कि peace होना चाहिए. But कल को यहाँ पे peace protest है. Will you go there? आप believe करते हो कि हाँ peace होना चाहिए. Suppose यहाँ पे peaceful protest है. We want against something कि हाँ पीस ही हमें चाहिए. उसके लिए लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट निकाली है कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के बीच में. देयर आर schisms that are being created, there are conflicts that is happening, so let's go for peaceful protest. और you also as a person believe कि yes पीस होना चाहिए सोसाइटी में. You believe कि पीस होना चाहिए. आपकी सोसाइटी में कुछ टर्मोइल हुआ, let's say like this, you believe that merit should win. You should believe that justice होना चाहिए. You have value towards this. You believe that the sports players जिनके साथ कुछ खराब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. अब स्पोर्ट्स प्लेयर they are going for protest. Will you go there? Not necessarily. आपके बाकी भी काम है. You will. So even if you have that value for justice, even if you have value towards merit, even if you believe that something should be done for the sports, does not mean कि अगर sports persons they are protesting, you will probably go there. So they are general determinant of the behavior. They don't guarantee behavior. They can just generally determine your behavior. तो guarantee नहीं होगा कि आप ऐसे ही behave करो. Morals तो आपको पता है, morals और ethics आपको पता है. एक लाइन लिख ही लो. Morals are considered as individual belief. Considered as individual belief with respect to right or wrong. What do you believe to be right or wrong? Individual belief about right or wrong. Then right, ethics. Ethics is rules or standards generally set by society. Bracket में लिख सकते हो generally set by society, which provides us a framework for understanding and interpreting what is right or wrong. ठीक है. Last लिखो attitude. क्या होता है attitude? It is readiness. It is a readiness, READINESS, readiness of psyche, PSYCH, readiness of psyche to act or react in a certain manner. Basically आपका predisposition है, आपकी readiness है कि आप एक manner में react करोगे. ठीक है? That is your attitude. So for example, you saw something, suppose you saw a animal, you will have a tendency to react in a particular manner. You can go away, you can cuddle that animal, you can probably also start hitting or फिर tease करने लगोगे. So you have a tendency to act in a particular manner. It is your attitude. So what is attitude? Your readiness, the readiness of a psyche to act or react in a particular manner.
दिस इज एटीट्यूड इज अ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर. आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर को जनरली most of the time it is the attitude that determines your behavior. So it's like it is a specific determinant of the behavior. ठीक है. So how will you tend to react? That determines, that is based on your attitude. तो क्या होता है? What are these? These are basically mental construct. What does these actually mean? Belief यानी क्या? Internal feeling कि कुछ सही है. Value यानी क्या? Preference, किस चीज को prefer करोगे. बहुत सारे belief होते हैं, but कौन से belief को prefer करोगे. ठीक है. Strong belief will become your value. Value क्या determine करेगा? कैसे सही और गलत को देखते हो. At the individual level, that becomes the morality. जब वैल्यू एट द लेवल ऑफ सोसाइटी होती है, सोसाइटी कैसे सही और गलत देखती है उसको बोलते हो एथिक्स. और ये सब डिटरमाइन क्या करता है? बिलीफ, वैल्यूज, मोरालिटी, दे डिटरमाइन कि कैसे तुम रिएक्ट करोगे. हाउ विल यू रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, हाउ विल यू टेंड टू रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशन. दैट इज योर एटीट्यूड. व्हाट इज योर साइकी फॉर रिएक्शन. सो व्हाट आर दिस. ठीक है. इनके बीच में रिलेशन क्या है? सो गिव द हेडिंग द रिलेशन बिटवीन देम एंड ड्रॉ अ चार्ट. आई विल ड्रॉ दिस चार्ट फॉर यू. You also draw it along with me. So relationship between them, give the heading relationship between them. Very strong and long lasting belief, they become your values. What strong belief है, long lasting belief है, they will become values. ठीक है. Strong everlasting belief becoming the values. The values जो होता है, ठीक है, values about right or wrong at individual level. Values about right or wrong at individual level becomes what? Morality. And right or wrong at the societal level, at the societal level becomes the ethics. ठीक है. And morality when accepted by the society, ये जो morality when it is accepted by society becomes ethics. अभी same sex marriage किसी के लिए मॉरल है, किसी के लिए इमोरल है. जब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी तब वो क्या हो जाएगा? तब वो एथिक्स बन जाएगा. वैल्यूज व्हेन टाइड टू एन ऑब्जेक्ट. अगर आपने अपनी वैल्यूज के कोई एक ऑब्जेक्ट को टाई कर दिया तब क्या बनता है? देन इट बिकम्स एटीट्यूड. देन इट बिकम्स एटीट्यूड. मोरालिटी भी तो मोरालिटी देखो, वैल्यूज आप काफी सारी चीज कर सकते हो. सारी वैल्यूज. कैन यू अप्रिशिएट ब्यूटी? कैन यू वैल्यू ब्यूटी? क्या आप ब्यूटी को वैल्यू कर सकते हो कि ये सुंदर है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है, ये चीज सुंदर है, मैं उसको प्रेफरेंस दे रही हूँ. क्या वो मोरालिटी के प्रिज्म में आएगी? वो मोरालिटी के प्रिज्म में नहीं आएगी. वो वैल्यूज जो सही और गलत, वो बनती है मोरालिटी. समझ लो. राइट और रॉन्ग बताए. आई कैन हैव प्रेफरेंस फॉर ब्यूटी, आई कैन हैव प्रेफरेंस फॉर लव, आई कैन हैव प्रेफरेंस. तो पॉइंट ये है कि जो राइट और रॉन्ग को नहीं देख रहे हो वो मोरालिटी के प्रेफरेंस में, वो मोरालिटी के सर्कल में नहीं आएगा. समझ आया? तो दैट इज योर वैल्यूज. कैन आई वैल्यू क्रिएटिविटी? यस. बट अगर मेरे पास क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या मैं इमोरल हो गई? नहीं. कैन आई may value beauty, but if I'm not good looking, so have I become immoral? No. You can have value which is preference, but that value which tells you right or wrong. For example, I may value courage, but if a person should be courageous. If a person is not courageous, क्या वो immoral हो गया? हो गया. Courage as a value you should stand for. It will become immoral. You should speak what is correct. You should be courageous. कुछ values ऐसी होती हैं जिसको आप prism of right और wrong से देख सकते हो. Somebody can value adventure. ठीक है. तो क्या वो immoral हो गया? नहीं. Courage क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि courage is something. When I say courage, it's about if you cannot stand for what you believe in. Courage is आप जो believe करते हो उसके लिए खड़े रहो. अगर आप उसके लिए खड़े नहीं रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आप immoral action कर रहे हो. समझ रहे हो? That means you have to believe and you have to stand for what you believe. Lack of courage implies you are wrong. ठीक है.
it's you should be honest. If you are not honest, are you immoral or not? You should be courageous. If you're not courageous, you are being immoral. You should have the ability to stand for what you believe to be true, what you believe to be right. Samajh aaya? Otherwise, you are there. That will lie in the purview of. So not all the values will lie in the purview of morality. Only some values will lie in the purview of morality. Those values which can determine right or wrong. ठीक है? Adventure right or wrong नहीं है, creativity right or wrong नहीं है, ठीक है? Beauty right or wrong नहीं है. समझ आया? Okay. And have you written this? Values when tied to an object becomes an attitude. एक attitude आप देखोगे, you will generally listen. एक होता है bureaucratic attitude और एक होता है democratic attitude. One is bureaucratic attitude, one is democratic attitude. What is a bureaucratic attitude? A person that respects bureaucratic values has bureaucratic attitude. A person that respects democratic values has democratic attitude. So what I'm trying to say, values, when it is tied to an object, it becomes your attitude. So bureaucratic attitude kya bolega? The person, an administrator with bureaucratic values will value rule of law. A person with bureaucratic values, yani, see, there are two persons. One is a person that has bureaucratic values and he has bureaucratic attitude. The other is a person with democratic values has democratic attitude. So person with bureaucratic attitude, what does he respect? He respects rule of law. He respects neutrality. He respects hierarchy. Hierarchy honi chahiye. You should follow chain of command. You should follow chain of command. A person with democratic values will respect what? Will respect. There should be compassion. There should be deliberation. And debate. So when you tie values to a particular object, यहाँ पे administration को tie किया, that becomes your attitude. ठीक है? So attitude is specific determinant of behavior. It is your tendency to react in a particular thing. आगे बढ़े? ठीक है. So this was about what do you mean by belief, attitude, values, morality, and ethics, and what is the relationship between them. Okay. So please give the heading, the characteristics of the characteristic features of belief, attitude, values, morality, ethics. ठीक है? क्या ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है? यानी क्या ये चेंज हो सकते हैं विद टाइम? क्या ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? क्या ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं? आपका बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज, can they change according to situation? Can they change according to your according to time? तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सोसाइटी का स्पेसिफिक है? It is quite possible that Indian society has a very different belief system as compared to that of the American society. It is quite possible that French society has a very different belief system. तो क्या ये यूनिवर्सल है कि क्या ये सोसाइटी के स्पेसिफिक है? क्या क्या सोचना है? क्या ये टाइम के साथ चेंज होते हैं? क्या ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं? क्या ये सोसाइटी के हिसाब से चेंज होते हैं? That's what you have to think. ठीक है? So please write first one, that static versus dynamic. Static में ब्रैकेट में लिखो unchanging. Static is unchanging versus dynamic. So this was the question that asked me, can they be changed? Yes, लिखे dash करके, it is relatively permanent. It is relatively permanent. Why are they relatively permanent? The reason they are relatively permanent, क्यों ये permanent होते हैं? Because ये हमारी identity का source होते हैं. ठीक है? It is not easy to change your identity. It is not easy to change your source where you are acting from. So they are the source of our identity, one. Second, we have invested massive amount of time and energy in them. To develop a certain belief, to develop a certain values, we invest a massive amount of time and energy. However, ये कब change होते हैं? When there is a very unusual incident. कोई unusual incident हो गया, दिल दहलाने वाला incident हुआ, तो इनकी values आपकी
चेंज हो जाएगी, बिलीफ आपके चेंज हो जाएंगे। हिस्ट्री के 2-3 एग्जाम्पल, गांधी जी, when Gandhiji witnessed the wrath of racism, when he was actually thrown out of the train, then Gandhiji realized that he has to do something. गांधीजी तो लॉयर बनने जा रहे थे, जब उन्होंने पहला उनको इंसिडेंट ये हुआ रेसिज्म, जब उन्होंने देखा, जब उनको ट्रेन से निकाल दिया गया था डिस्पाइट हैविंग दी टिकट, तो उनको जब ट्रेन से निकाल दिया गया तब उनको लगा कि yes, that is something, this is something wrong. Then he went to South Africa, then he saw that many people, they have suffered from this racism and the issues. Then he thought of doing something, thought of coming back to the India and then started fighting for the independence. So your values, belief, attitude can change when you have certain incident, a very life-changing incident. दूसरा एग्जाम्पल हिस्ट्री से, अगर आप किंग अशोक देखेंगे, किंग अशोक, कलिंग वॉर, when he saw that there are massive things, there were massive dead bodies, then what he started from Beri Gosha to Dhamma Gosha. उन्होंने बोला कि अब no longer fight using war, but it is fight of religion, it is fight of the culture. ठीक है, we have to go for ethical society. So your belief, attitude, values, morality, ethics can change if there is a life-changing incident. ठीक है, तो ये लिखो, लिखिए, they are a source of identity. They are the source of identity. They are the result of massive investment of time, cost, and energy. However, there can be a variation if the environment changes drastically, or the behavior to express the given value, the behavior to express the given value undergoes a change. Example, King Ashoka before Kaling War or after Kaling War. Khan Singh Tomar, yes, Khan Singh Tomar. ठीक है, यही तो था क्वेश्चन जो यूपीएससी का था. लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन. क्या आप चेंज हो सकते हो? क्या आपकी वैल्यू सिस्टम चेंज हो सकते हैं? यस, दे आर रिलेटिवली परमानेंट, दे आर नॉट इजी टू चेंज, बट इट कैन बी चेंज्ड. सेकंड, आर दीज एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव? सेकंड लिखिए, एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव. एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव का क्या मतलब होता है? सिचुएशन के हिसाब से. क्या ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं? रिलेटिव है क्या ये एब्सोल्यूट है? तो व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी चेंज एज पर दी सिचुएशन. की सिचुएशन चेंज हुई तो आपकी वैल्यूज भी आपकी चेंज हो सकती हैं. ठीक है, तो इस पे एक्चुअली दो व्यू पॉइंट है. वन व्यू पॉइंट ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज है, दे आर एब्सोल्यूट वैल्यूज. इट्स लाइक there can be no right way of doing a wrong thing. अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको कितने भी सही तरीके से करो वो गलत ही है. ये एक व्यू पॉइंट है कि वैल्यूज एब्सोल्यूट है, that certain values they cannot be compromised. ठीक है, non violence cannot be compromised. ठीक है, your hatred cannot be, your non violence cannot be compromised, your love cannot be compromised, care cannot be compromised. तो कुछ वैल्यूज आपकी एब्सोल्यूट हैं, बट कुछ वैल्यूज दे कैन change. So there are two schools which says certain values are absolute. There cannot be a right way of doing a wrong thing, but certain values they are changing, they can be changed. Okay? Absolute says that values are constant, and independent. Values are constant and independent of the situation. However, relative implies that they can change as per the context. ठीक है, यानी basically nothing can be right for all time to come, nothing can be wrong for all time to come. अगर आपको ये relative school कहता है कि आज सही है, but that does not mean कि कल भी सही रहेगा, परसों भी सही रहेगा. ठीक है, so that is one thing, that is nothing is right for all time to come, nothing is wrong for all time to come. If you are being absolute, you are being rigid, but एक दूसरा स्कूल बोलता है कि नहीं, जो चीज गलत है वो तो गलत है. You cannot have
a right way of doing the wrong thing. तो basically सत्य कड़वा नहीं, सत्य तो बस सत्य होता है, जब आचरण में आता है तो यही धर्म होता है. तो चाहे सत्य है, जो सत्य सिर्फ कड़वा नहीं होता है, सत्य धर्म होता है. तो आपको ये सत्य को तो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा. ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, नॉन वायलेंस इज एब्सोल्यूट, पीस इज एब्सोल्यूट. However, other values can change as per the situations. They can change as per whatever the circumstances is. ठीक है? कि for example, following the law is right. आपको law को follow करना चाहिए. But then if you jump the traffic light to save someone's life, so can I say that following the law has become a subsidiary, secondary to saving someone else's life? लिखो. The school, there are two schools, one which believes that values are relative, that nothing can be right or wrong, across time and space. Absoluteness leads to rigidity, and values actually depend on situation and timings okay. Other school believes that values are absolute. A wrong is wrong, and there is no right way of doing a wrong thing. Actually जैसे कि रॉबिन हुड रॉबरी थी, ठीक है, तो क्या रॉबिन हुड रॉबरी सही थी? There would be some people who would say that Robin Hood robbery is wrong. Even if you're stealing to give it to poor, this is wrong. Stealing to galat hai, ठीक है? So that is absolute one. So लिख सकते हो Robin Hood robberies are considered wrong by few people. ठीक है? So this was about whether they are absolute or they are relative, whether they are dynamic or they are static. Third, cultural specific versus universal values. क्या कल्चरल स्पेसिफिक होती है कि यूनिवर्सल होती है? तो कल्चरल स्पेसिफिक होती है, जैसे कि बुर्का, ठीक है, राइट. वैल्यूज की बात करें, बेसिकली फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी कैन रिस्पेक्ट कलेक्टिविज्म, अमेरिकन सोसाइटी कैन वैल्यू इंडिविजुअलिज्म. वी हैव स्ट्रॉन्ग रिलीजियस in orientation. American society does not have strong religious orientation, so they are cultural specific. However, there are certain values that are universal also. You go to any society, they will have respect for human values. Love, care, compassion, honesty, किसको नहीं चाहिए? Trust, loyalty, किसको नहीं चाहिए? कोई भी नहीं बोलेगा कि trust नहीं चाहिए, loyalty नहीं चाहिए, ठीक है? So that is, कितना इंपॉर्टेंस देते हो ये अलग बात है, बट चाहिए तो होता है, ठीक है? तो कुछ वैल्यूज कल्चरल स्पेसिफिक है, कुछ वैल्यूज यूनिवर्सल है. एक चीज अब तक समझ आ गई होगी, मध्यम मार्ग, ठीक है? यू डोंट हैव ब्लैक और व्हाइट, यू हैव ऑल दी शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है? तो ब्लैक और व्हाइट एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है, सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं. मध्यम मार्ग इज दी वे फॉरवर्ड. लिखो कल्चरल स्पेसिफिक और यूनिवर्सल. Cultural specific or universal, इसमें values are glue that binds cultures together. Some values are cultural specific. सोसाइटी को बांध के रखती है, इसलिए कुछ values क्या होती है? कल्चरल स्पेसिफिक हो जाती है. एग्जाम्पल, कलेक्टिविज्म, strong religious orientation, familial obedience. Family में obedience is followed in Indian society. ये बात नहीं मान रहा, बदतमीजी कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है, ठीक है? फैमिली में नहीं पार्टिसिपेट करता. That's what you have Indian society में. कलेक्टिविज्म पे फोकस्ड है, ओबीडियंस पे फोकस्ड है, और strong religious orientation पे focus है. But consider in American society, at the age of 16, you find your path, you develop you want to be independent, you want to have autonomy, you are collectivism में, you have your individualism. So while American society, there was one speech था,
that one lady asked Aishwarya Rai Bachchan, it's you still live with your parents. We don't understand that. Just like likewise, we don't understand that you have to take appointments from your parents for having dinner. Okay? So it's the society, right? So American society values. American society values individualism, adventure over obedience, या questioning over obedience. क्यों सुने? पहले question बताओ. Some logic बताओ. So questioning over obedience. ये एक फेमस टीचर है यूपीएससी के दिव्य कीर्ति सर, वो कहते हैं ना, एलॉन मस्क अमेरिका में ही बन सकता था. द होल सिस्टम इज लाइक दैट. ठीक है, लिखो. however there are certain values that transcend the boundaries of different culture, Example, love, honesty, compassion. Okay. So they are cultural specific as well as they are universal. They are relative permanent, but they can be changed. And there is absolute versus relativity. There are two schools, one which says that they can be absolute, they can be relative. Okay. Now, एक और डिबेट है कि एक तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, एक तो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, कुछ तो अलग ही है, सोसाइटी की ही अलग है. एक ये होता है, क्या वैल्यूज आर दे टाइड टू एन इंडिविजुअल और दे आर टाइड टू समथिंग आउट. इंडिविजुअल को टाइड है, सोसाइटी को टाइड है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि एब्सोल्यूट है. ठीक है, तो it is, there are also again two school which says that yes, they are tied to an individual. Certain says that they are not tied to an individual. Beauty lies in the eyes of beholder. आप ब्यूटी इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो जाती है कि आप बोल रहे हो ऑनेस्टी, कितनी ऑनेस्टी, कैसी ऑनेस्टी, कौन से सर्कमस्टेंस पे ऑनेस्टी. सो इंडिविजुअल के हिसाब से भी वैल्यूज बदलती रहती है. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन belief and values? What is the difference between belief and values? Belief क्या है? Internal feeling that something is true. Value क्या है? Preference. Values आती कहाँ से? Strong belief they turn into values. If you have a very strong belief, they turn into values. तो सोचो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि belief और values में फर्क क्या होगा. Think about it for 1 minute. Not always rational belief भी हो सकता है. One source of belief can also be religion. Belief है क्या? Belief हमारी assumptions है. Belief are assumptions. Where values क्या होती है? अगर हम उस preference को एक object को tie कर दे तो वो हो जाती है values. Belief हमारी assumptions होती है. Values हमारा worth, क्या हम दाम लगा रहे, क्या हम मूल्य लगा रहे, क्या हम prefer कर रहे. ये लगाओगे किस पे? ये अपनी assumption के basis पे ही लगाओगे. One of the source of assumption can be religion. हाँ, यस, सोसाइटी. वैल्यूज भी तो फिर वहीं से आती है, बिलीफ ही तो बनता है वैल्यूज. डिफरेंस क्या हुआ? लिखो. बिलीफ का बिलीफ टर्न इनटू वैल्यूज, वैल्यूज इन टर्न स्ट्रेंथन योर बिलीफ सिस्टम. तो ये ऐसे साइकिल है कि बिलीफ आपका लॉन्ग टर्म में बन जाएगी वैल्यू, और जो वैल्यू करते जाओगे उसको ही अपने बिलीफ सिस्टम को फीड करते जाओगे. यू विल स्टार्ट, इट्स लाइक दैट सर्कल कि वो एक के बाद एक चल रहा है. हाँ, yes, we can say that. Yes, that can be said. लिखो. What you believe guides your values. What you believe guides your values. Strong belief can turn into values. Strong belief can turn into values. Differences between them. The difference between them. So give the heading differences. First, beliefs are assumption. They are assumption about the world. They are assumption about the world. Values refer to the worth, W-O-R-T-H, worth, that we attach to objects. क्या worth आप attach कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को? ठीक है, वो हमारे assumption है. ये आप दाम लगा रहे हो, ये आप वर्थ लगा रहे हो. सेकंड,
Belief stems from our life experience. Belief, they stem from our life experience, spiritual learning and culture. और values कहाँ से आती है? Belief से. Values stem from our values, they stem from our belief. Belief affects our morals. Belief affects our morals. Values are how we live our morals. How we live our morals. Through behavior, character. Through behavior and character. Next point. Belief can create a prejudice. Belief can create a prejudice. And values can manifest that prejudice. Values can manifest a prejudice. All women are bad drivers. This is a belief system of some. और value क्या होगी? इनको गाड़ी मत दो, इनको चलाने मत दो. तो वो manifest कर रहा है आपका prejudice. पर आया कहाँ से? Belief ने ये prejudice को stem किया. तो belief पहले आता है, फिर बाद में values आती है. Belief आपने कुछ assume किया, उसके कारण आपने उसको उतना दाम दिया. आई बिलीव कि मेरे करियर के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने उस चीज को उतना ध्यान नहीं दिया. आई डिड नॉट अटैच दैट मच ऑफ वैल्यू. बिलीफ इज एन assumption, value is a manifestation. Belief led to creation of prejudice, value led to manifestation of prejudice. Belief is generally coming from what? Your life experiences, your cultural values, your spiritual experiences. And where is the values coming from? From the belief itself. So one is the underlying assumption which is leading to the other. Okay. What are the similarities between them? दोनों में similarities क्या? लिखो similarities. They are ठीक है, individual level पे होता है. और क्या दोनों change हो सकते हैं over time? They can change over time. Both can change over time. Can they provide a source of identity to me? Both provide a source of identity. Both act as a source of identity. Both influence our behavior. Both influence our behavior. And how we experience the world. And how we experience the world. कैसे world को experience करोगे? वो आपका belief system बताएगा, वो आपका value system बताएगा. Is it fine? ठीक है. So this was about your this one. The difference as well as question क्या आया UPSC में? The question has been differentiate between values and belief. ये question है. Differentiate करो values और belief को. हाँ, yes, belief तो assumption पे ही based है. Even values भी आपकी क्या worth देते हो आपके assumption पे ही based है. Not necessarily will they depict a true picture. आपकी assumption कितनी सही है, कितनी in touch to reality है, वो determine करेगा कि true picture है कि नहीं. Your assumption can be correct, your assumption can be wrong. ठीक है. तो आप कैसे external environment को देखते हो, उस पे भी और assumption कितनी सही है और कितनी गलत है. ठीक है. That was the question in UPSC. Differentiate between values and belief. और भी उन्होंने differentiation पूछा UPSC ने. Law और ethics पे पूछा है, values और ethics पे भी पूछा है. What is the difference between value and ethics? What is the difference between law and ethics? ठीक है. तो moral और ethics तो हमने लिख लिया था. We've written morals and ethics. Differentiate between morals and ethics. We've written differentiate between the belief and values. ठीक है. तो लिखो law और ethics पे लिखो ethics and law. Differentiate between ethics and law. Why do we get what is law? What is law? What is ethics? Ethics तो पता है, the right or wrong standard set by the society. What is law? और law बनाते ही क्यों है? Why do we create law in the first place? Can law also help in right or wrong decision? Can law also govern my behavior? Can law make me an ethical individual being? Person who goes to the right. Ethical person. क्या मुझे law एक ethical person बना सकता है? Direction तो दे ही सकता है. ठीक है. तो law, what is law? Law basically is an instrument that is made by parliament. It has legal backing. And what is the aim of law? Aim क्या करना चाहते हो? To achieve common good. एक कोई common good achieve करना चाहता है, society को align करना चाहता है, society को vices से दूर रखना चाहता है और society को virtuous बनाना चाहता है. यही तो law चाहता है. Society को virtuous बनाओ, vices से दूर रखो, society के common good के लिए काम करो. तो ethics basically एक source of ethics can also be your law. कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो can also be your law. However,
However, ये तो एक रिलेशन हुआ कि लॉ फर्दर आपको एक एथिकल इंसान बनाएगा, लॉ फर्दर आपके एथिक्स को प्रमोट करेगा, लॉ फर्दर आपकी सोसाइटी में एथिक्स लाएगा। कुछ लॉ जैसे कि दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट इज मेकिंग सोसाइटी एथिकल। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, एम्स टू मेक दी सोसाइटी एथिकल। हाँ, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, that is trying to make the society ethical. So law actually provides a direction. Law direction to provide karta hai, but how law is actually providing direction, but how is law trying to change an individual? Is it trying to change an individual by actually creating a change in the mindset of an individual? Yeah, it is trying to change an individual by creating a deterrence. लॉ कैसे इंसान को चेंज करना चाहते हैं? बाय क्रिएटिंग द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडिविजुअल, और बाय क्रिएटिंग अ चेंज इन द, बाय क्रिएटिंग अ डेटरेंस। कैसे? बाय क्रिएटिंग अ डेटरेंस। लॉ इज ट्राइंग टू चेंज एन इंडिविजुअल बाय क्रिएटिंग अ डेटरेंस। यानी वेदर अ पर्सन will implement the law successfully or not also depends on the ethics of an individual. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? I am trying to say that law is something which will make a person ethical, but will I follow this law in letter and spirit depends also on my ethics. एक बहुत famous saying है, good people do not need law, whereas bad people will always find a loophole in the law. ठीक है, तो ये डायरेक्शन दे सकता है, बट अल्टीमेटली सस्टेनेबल डिफरेंस के लिए, अल्टीमेटली सस्टेनेबल चेंज के लिए हमको कहाँ जाना है? हमें लोगों का एथिक्स ही चेंज करना पड़ेगा। एक और बहुत फेमस सेइंग, इफ यू विल बिलीव, लॉ कैन प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच अ सोसाइटी कैन मूव। आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा इन विच अ सोसाइटी कैन मूव, बट द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। आप कितने भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ला लो, करप्शन कहीं ना कहीं अभी भी है। क्यों? बिकॉज इट कैन जस्ट प्रोवाइड सम डेटरेंस, इट कैन जस्ट प्रोवाइड सम fear. However, in the long run, it is the ethics that will be sustainable. It is the ethics that will bring a sustainable changes. समझ आ रहा है? तो लॉ इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लॉ को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, एथिक्स पे डिपेंड करता है। लॉ एक्सटर्नल है, लॉ सारी सिचुएशन को गवर्न नहीं कर सकता। लॉ कैन नॉट गवर्न ऑल द सिचुएशन। लॉ एक्सटर्नल है, किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। लॉ शॉर्ट टर्म में बात कर सकता है, डेटरेंस की बात कर सकता है, ठीक है, बट ये माइंडसेट चेंज कर देगा, ये लॉन्ग टर्म में साथ देगा, ये हर सिचुएशन में आपके साथ रहेगा। समझ आ रहा है? लॉ और एथिक्स में लॉ इज नीडेड, हाउएवर यू नीड टू मूव बियॉन्ड लॉ, ठीक है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस एंड द रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड लॉ इज, ठीक है। तो लिखो, write this, law and ethics. Law and ethics. Law refers to legislation passed by a legislative body which aims at achieving common good. Law are based on ethical framework. Generally law ethical ही होते हैं. Laws are based on ethical framework and aim to bring social changes while controlling the unethical behavior, of the individual in society, of the individuals in society. Law aims at creating deterrence as an individual indulging in illegal activities is liable to face punishment, ठीक है। So ये दोनों में, ये basically law करना क्या चाहता है? You can write the aim of the law is to create an ethical behavior.
among individuals. एक ethical behavior चाहता है among the individual. ठीक है, ठीक है. However, law can provide a direction. Law can provide a direction to a society. It can provide a direction to a society in how a society should move. In how a society should move. In reality, full stop. In reality, it is ethics. In reality, it is ethics that decide how the society actually moves. Law at max can govern your behavior, can govern behavior of an individual. It is an ethics that actually governs intention and is a compass to take right action in every situation. समझ आ रहा है कि लॉ ठीक है कुछ सिचुएशन पे करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी एट योर डिस्क्रिशनरी पावर, यू विल हैव लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, यू विल हैव लॉट ऑफ मनी. लॉ तो नहीं है वहां पे, यू कैन यूटिलाइज एज पर योर विजडम. व्हाट विल डिसाइड your ethics will determine whether you're going for right or wrong. You are a doctor. Is there any law which says that you cannot prescribe generic medicine? There is no law which says कि आप generic medicine prescribe ना करें, आप branded medicine ही prescribe करें. But branded medicine और generic medicine में काफी cost का फर्क है. तो कोई law नहीं है, but आप क्या follow करते हो that determines. आप क्या profit को follow करते हो कि आप ट्रीटमेंट को फॉलो करते हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर एथिक्स. तो कैसे डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करोगे, क्या प्रिस्क्राइब करोगे, जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन, दैट डिपेंड्स ऑन योर एथिक्स. क्या कोई लॉ है कि आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही बनाने? नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है. बट एज अ बिजनेसमैन, व्हाट डू यू रिस्पेक्ट? डू यू रिस्पेक्ट एनवायरमेंटल एथिक्स और नॉट? डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू सिस्टम. अल्टीमेटली हम सब हमारे वैल्यू सिस्टम से ही गवर्न होते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दोनों में डिफरेंस अगर लिखना हो, इन केस यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स. ठीक है, सो हियर यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ द डेफिनेशन. पहले फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हो. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन दैट व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज एथिक्स. डिफरेंस में फर्स्ट डेफिनेशन रख सकते हो. सेकंड, लॉ कैसा है? लॉ इज, इट इज एक्सटर्नल इन नेचर. ठीक है, इट इज, एथिक्स इज, इट इज एक्सटर्नल, बट इसका जो मोरालिटी के साथ अगर आप कर लेते हो, ठीक है, इट इज ऑल्सो एक्सटर्नल इन नेचर, बट इट हैज एन एलिमेंट ऑफ मोरालिटी अटैच्ड. सिर्फ एथिक्स सोसाइटी जो बोल रहा है उसकी बात नहीं है, बट देन आपकी एक मोरालिटी का कंपोनेंट भी उस पे अटैच्ड होता है. इसका ये कैसे चेंज करना चाहता है? क्रिएट करना चाहता है चेंज वाया, इट क्रिएट्स चेंज वाया डेटरेंस. ये डेटरेंस की तरह है. ये कैसे चेंज करना चाहता है? कैन क्रिएट चेंज बाय इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, तो ये डेटरेंस के ऊपर बेस्ड है. ये इस पे कैन लॉ गवर्न ऑल सिचुएशन, कैन गवर्न, इट कांट गवर्न ऑल सिचुएशन. ये कैसे है? इट इज गवर्निंग ऑल सिचुएशन, क्योंकि ये तो इंटरनल कंपस है. गवर्न ऑल सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कंपस चेंज हुआ है. आपने किसी को, 4 पॉइंट लिख लिए, लिख लो. पहले मुझे एक बात बताओ, यू थॉट ऑफ किलिंग समवन. ठीक है, यू थॉट ऑफ मर्डरिंग समवन, आपने सोचा इसको मर्डर करते हैं. कैन लॉ पनिश यू? थॉट, आपने एक्शन नहीं लिया है. यू थॉट ऑफ किलिंग समवन, कैन लॉ पनिश यू? ऐसे तो बहुत बार फिर हमें जेल हो जाती है दिन में. ठीक है, लॉ कैन नॉट पनिश यू. कैन, आर यू गिल्टी इन द कोर्ट ऑफ एथिक्स? You are guilty in the court of morality. You are guilty in the court of ethics. ये क्या है? This is, law is reactive in nature. It is reactive and action oriented. अगर आपने
कोई एक्शन लिया है तो ही लॉ पिक्चर में आएगा. रिएक्टिव है एंड एक्शन ओरिएंटेड है. बट व्हाट इज एथिक्स? इट इज proactive. It is proactive and it is intent oriented. अगर आपने सोच भी लिया किसी को मर्डर करने का, तो आप एथिक्स के कोर्ट में गिल्टी हो. तो गांधी जी क्या कहते हैं? देयर इज नो हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ conscience. There is one court which is higher than the court of law and justice, that is the court of conscience. It supersedes all the other courts. समझ आया? तो ये इंटेंट ओरिएंटेड है, ये वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो रिएक्टिव है, वो पोस्ट, वो बाद में आएगा, एक्शन होने के बाद कम इनटू पिक्चर, ये पहले ही पिक्चर में आ जाएगा. ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? एक एग्जाम्पल्स बताओ. लीगल लिखो, एग्जाम्पल्स लीगल बट अनएथिकल. एग्जाम्पल्स लीगल बट अनएथिकल. एक्ट तो लीगल है बट अनएथिकल है. लीगल बट अनएथिकल. टेल मी एक्ट व्हिच इज लीगल बट अनएथिकल. ब्रेकिंग प्रोमिसेस विद फ्रेंड्स. ठीक है, क्या वो लीगल है? आपको थोड़ी कोई जेल लेके जा रहा है, क्या वो अनएथिकल है? चीटिंग. ठीक है, चीटिंग. सो यू कैन से ब्रेक. हाँ, मतलब चीटिंग विद फ्रेंड्स, लोगों से झूठ बोलना, चीट करना. ठीक है, तो ब्रेकिंग प्रोमिसेस विद फ्रेंड्स, लीगल बट अनएथिकल. सिंपल. लिख लो. ब्रेकिंग प्रोमिसेस विद फ्रेंड्स इज लीगल बट अनएथिकल. लीगल बट अनएथिकल. Prostitution in some countries is legal. Prostitution in some countries is legal, but it is unethical. Unethical क्यों है? Why is prostitution unethical? वो पूरा एक सोच रही हूँ ना, to start thinking now. ठीक है, can I say it is commodification of women's body? Commodify कर रहे हो, so it is unethical. So prostitution is legal in some countries, but not ethical as it is commodification. हाँ, but उसमें फिर भी आप you see, Immanuel Kant sir would say man should be treated with dignity. ठीक है, man should be treated as an end in itself and not as a means to an end. You are using a human body for pleasure, where a human body should be treated as an end in itself. ठीक है, that what your Immanuel Kant sir would say कि नहीं, ये गलत है. So it is, and you will see majority of them, they are indulging in because of some difficult situations. ठीक है, many of them have been taken into as a without their consent. Children, child, they have been forced into it. तो forced है, lack of consent के कारण होता है. ठीक है, and आपकी जो age है उससे भी कम में होता है. That is why it is, वो तो illegal भी है यहाँ पे, but then yeah, that is also unethical because it is commodification of a body. We should not commodify certain body. ठीक है, you know that suicide has been decriminalized. suicide को अब ये suicide अभी आपको जेल नहीं लेके जा सकते हैं. It has been decriminalized. ठीक है, but is it ethical? No, it is not ethical. ठीक है, cheating on a spouse, adultery को भी decriminalize किया हुआ है. Adultery is in extramarital affairs. Cheating on spouse. Suicide is also, it has been decriminalized. Section 309C of IPC. Section 309 of IPC ने decriminalize कर दिया. ठीक है, तो suicide has been decriminalized, but it is still unethical. Cheating भी unethical. Passive euthanasia सुना? Euthanasia पता है? So there can be an active euthanasia, there can be a passive euthanasia. Passive euthanasia यानी you are taking out the ventilator का support हटा दिया. Ventilator का support हटा दिया है, उसको बोलते हैं passive euthanasia. It is not illegal, but it is unethical. So passive euthanasia, intentionally letting a patient die. Intentionally letting a patient die by withholding artificial life support. But कई बार patient is not in a condition to give consent. Then who gives the consent? It is the family that gives the consent. So if a person is on ventilator, the person
the person is not able to give the consent also many times, तो family decide करती है, तो वो illegal नहीं है. Passive euthanasia is not illegal, but it is unethical. ठीक है? Yes, Aruna Shanba, correct. Aruna Shanba case. See, right to life means right to life with dignity. Now, a person who is on ventilator being fed with tubes, is that life right to life with dignity? ये बोलते हैं कि then the right to life is not a passive vegetative state में आप रह रहे हो. Passive vegetative state में नहीं हो रहा ना. You have to live with dignity. That is what is the intention of right to life. But does that mean that right to life means right to die? तो फिर तो एक्टिव यूथेनेसिया भी मिल जाएगा. Right to life does not mean right to die. But right to life का मतलब है right to live with dignity, not to live with a passive vegetative state. समझ आ रहा है? So but that it is said that this person is not living, that the person is actually not having right to life. आप बोल रहे हो कि right to life है, but वो right to life है नहीं, because that person is not living with dignity. इसीलिए उसको legalize किया है. समझ रहे हो? Activist, you are fine, you are healthy, you are fit, but then you are going for active euthanasia. That is what. ठीक है? You live a, इसीलिए संथारा भी प्रॉब्लम है. ठीक है? कि आप अच्छे हो, हेल्दी हो, बट आपने खाना खाना छोड़ दिया. तो what is that? It is like active euthanasia. ठीक है? Then right, ethical but ये क्या थे? Legal but unethical. What were these? These were legal but unethical. ठीक है? लिखो. क्या देखा अभी? Legal but अभी देख लिया. Legal but unethical. दूसरा है illegal but ethical. Illegal but ethical. यानी ethics के कोर्ट में सही मानोगे, but actually illegal है. Stealing to give a hungry child. Robin Hood robberies they are considered ethical by few people. सब उसको unethical नहीं कहते. Robin Hood robberies. हाँ बिल्कुल, वो किसी केस में तो ethical है ही. Deontology उसको बोलेगा. Deontology स्कूल क्या बोलेगा? Deontology यानी means सही अपनाए हैं कि नहीं, ड्यूटी की है कि नहीं. Deontology बोलेगा unethical है. Consequences क्या बोलेगा? Happiness for greater number of people. Consequence सही था, उसको खुशी हो गई, तो तुम्हारी चोरी ठीक है. तो इसमें भी स्कूल्स है, सिर्फ सोसाइटी नहीं. कौन से स्कूल से देखते हो, that also matters. So deontology will say it is incorrect, but consequentialists will say it is correct. ठीक है? Breaking salt tax, it was illegal, but गांधी जी के हिसाब से it was ethical. Breaking, for that matter, Indian society के हिसाब से breaking salt tax was, Dandi March was ethical. Breaking traffic rule to save someone's life. जितने भी पुराने वाले laws है ना, जो कि हमने illegal acts की हुई है, जैसे ब्रिटिश के टाइम पे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पे ये था कि you cannot print paper in vernacular language, क्योंकि नेशनलिज्म बढ़ रहा था. तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पेपर नहीं प्रिंट कर सकते थे. अगर प्रिंट करना था तो 2 जजेस का परमिशन लेना था कि आप ये कंटेंट देखो. वो रिव्यूअर थे. ठीक है? आप ये कंटेंट देखो और देखो कि ये नेशनलिज्म को नहीं प्रोपोगेट करा. तो हम लोगों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को तोड़ा. तो वो एथिकल था, बट वो इलीगल था. तो ब्रिटिश के जितने भी हमने लॉ तोड़े हैं वो सब इलीगल थे, पर वो सब क्या थे? वो सब एथिकल थे. मुझे एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ कि ब्रिटिश के जितने भी हमने तोड़े हैं वो सब एथिकल थे. क्यों कह रहे हैं हम? Why am I saying like this? See, now I'm taking a different debate. Whenever somebody is making a law, let's say Parliament is making a law, who has given the authority to the Parliament to make the law? People has given you the authority. It is the people that has given the authority. That means there is a contract. There is a contract between the people and the Parliament. This is called as social contract. Social contract that I don't have time to make laws. I have my duties to do. I have my studies to do. I have my families to look after. So law aap banao. In that case, I have given you the authority to make the law. Now, aapka duty kya hai? Your duty is to take my consent. Your duty is to uphold my expectations. Your duty is to serve my interests. That is why I have given you. अगर आप medieval times में देखोगे तो it is said that king कहाँ से आया है? King को भगवान ने भेजा है. Divine theory of kingship. तभी ये जो पर्रे आजादी था कि जो लाइट दिख रही है, तो आप रूल कैसे कर रहे हो मुझ पे? So it was like the God has given me the authority to rule.
No, it is not the God that has given you the authority. I have given you the authority to rule over me, and it is your duty to serve my interest. So it is your duty to make law in my interest. If you don't make law in my interest, as per Gandhiji, if the law is unjust, he says it is the highest duty to break that law. ये क्या है? This is the social contract theory. तो एक line में लिख लो, unjust laws in the pre-independent era, unjust laws in the pre-independent era were ethical to break as it did not upheld the social contract theory. ठीक है, लिख लो, social contract theory mentions that there is a contract between people and between citizen and state, where the state has to uphold the expectations of the citizens and has to make laws for the welfare of society. समझ आया? फिर गांधी जी क्यों कहते थे कि अनजस्ट लॉस को तोड़ना चाहिए? बिकॉज वो लोग ऑलरेडी अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं. तो इट इज एथिकल बट इट इज इलीगल. समझ आया? इट इज इलीगल बिकॉज हम लॉ तोड़ रहे हैं, बट इट इज स्टिल ethical. This was about your ethics and law. They can ask you the difference, they can ask you the relation, they can tell you about what are the sources of ethics. We have done belief and values, we have done ethics and law, we have done ethics and moral. एक बचा हुआ है ethics or religion. We will cover that tomorrow. ठीक है? So this is from my side for today. All of you, thank you so much. Bye bye all.